My dear friends, greetings from Sur Sangam Reflections from Jaipur. 40 days have passed since we celebrated Christmas festival. And after the festival, we are celebrating, after 40 days, the festival of the presentation of the Lord. And we know this festival that is bringing Jesus into the temple to be dedicated back to Yahweh, who has been given to the parents as a gift. This is a tradition, and this tradition is followed by Joseph and Mary. Also, because it was considered that woman after the birth of a child needs to be purified for 40 days. And therefore, Mary and Joseph come there and offer the child back to Yahweh. Together with that, they give some gifts to the temple, but they are not very rich. So they give some ordinary gifts they can, and they go back. This festival is celebrated by the church today in a very special manner by lighting the candles. We bring the candles into the church, bless them, and all the people go in a procession into the temple. Because the significance of this little thing that happened there is now different. In other words, not only because the child is brought into the temple, but this child is an extraordinary child. We see this in the gospel written by Luke, where he talks about two important people. One is Simeon and another one is Hannah. Both are prophets. And they, in a way, get a premonition as to who this child is. This child is going to make a tremendous difference into the history of the world, where especially the Jewish world was waiting for the Messiah. And they feel that Messiah has come, and this Messiah is going to change everything in the world. Old covenant will be over, a new covenant will begin, and people will begin to relish the coming of God into them, the Emmanuel, God with us. But together with that, Hannah tells that things are going to be different for Mary. For Mary is going to suffer a lot. It is not going to be an easy way. My dear friends, today I want to tell you another thing. Namely, this day is also a day of consecrated people. Who are those consecrated people? They are those people who take religious vows, poverty, chastity, and obedience. There are priests and there are nuns too, and there are brothers as well. What do? Just as Jesus dedicated life for the cause, they also commit themselves for that. And therefore, it is a day of consecrated people. And we need to be thankful to them, thousands and thousands of them who are working all over the world. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। न केवल क्योंकि हम प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड का त्योहार मना रहे हैं, बल्कि हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने अपने आप को ईश्वर के काम के लिए समर्पित किया था और उन्होंने अपना सर्वांगीण दिया था। जहां भी वे काम कर रहे हैं, जिस जगह से कितनी भी कठिनाइयों से काम कर रहे हैं, वो केवल ईश्वर के लिए कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं मदर तेरेसा के सिस्टर्स हो या सिस्टर्स जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, या फादर्स जो दिन रात काम करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को ईश्वर के लिए अपना जीवन पर समर्पण किया है। और इसके साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, आपने और हमने भी अपना जीवन पर समर्पण किया है। कैसे? हम एक फैमिली के लिए अगर काम करते हैं, एक मकसद को मन में रख के काम करते हैं और प्रभु के उन गुणों को याद करते हैं जो प्रभु ने अपने आप को डेडिकेट किया, तो अब हमारा जीवन भी सुधर जाता है और ऐसा जीवन हम जीते हैं जो प्रभु ने हमें बुलाया है। क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन दिया है और जीवन का एक गोल है, एक मकसद है, उसको हमें निभाना है। इसीलिए जब हम कैंडल लेके आते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम एक दीपक के समान हमें चमकना है। क्योंकि दीपक क्या करता है? अंधकार को दूर भगाता है और सब जगह पर उजाला लेके आता है। आइए आज के दिन जब हम इस कैंडल को लेके आएंगे, जलते हुए दीपक को लेके आएंगे, हम याद रखें हमारा जीवन जो है ईश्वर की एक देन है, एक गिफ्ट है, एक तोहफा है।
और जिस प्रकार प्रभु को वहां पर समर्पित किया था उस टेम्पल में, उसी प्रकार हमें भी अपना आप को समर्पित जीवन जीना है। उसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर खास तौर पर उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिन्होंने विशेष रूप से अपने आप को एक समर्पित जीवन जीने के लिए कोशिश की है। उनके जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हंसमुख होकर आगे आते हैं क्योंकि प्रभु की आशीर्वाद उन पर है। उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें और अपने लिए भी हम प्रार्थना करें कि जो मोमबत्ती हम जलते हुए लेकर आते हैं वह हमेशा दीपक जलता रहे और हम इस प्रकार प्रभु के साथ एक हो जाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।